Thank you so much. Yeah. Just 1 minute. We will wait, ma'am. There are so many people in the queue. Then we will start. Okay. I think we can start now. If unmute yourself, you are mute, I think. Yeah, sure, ma'am. Thank you. Yeah, uh, my friends, it's my pleasure to introduce Professor Asia Choudhry, ma'am, one of the very dynamic, vibrant, knowledgeable, and in fact, scholar professor, you can say, from the Department of Commerce, Aligarh Muslim University, Aligarh. So, in fact, when I was silent, I was viewing her CV. In fact, it's very comprehensive. So I couldn't decide what should I leave and what should I read. In fact, but very crispy thing I have got, and I'm just presenting before you people. So definitely, she is a professor in the Department of Commerce, and she left since last 19 years in the department. She is teaching different courses like MBA, MTA, MCom, BCom, PGD, BRIM, PGDBF, and she has successfully completed a postdoc and 10 PhD students under her supervision. Her research work includes trade, marketing, behavioral economics, and women studies, which are published in national and international refereed journals like Emerald, Sage, etc. She holds 4 books and 35 academic papers to her credit and has successfully completed 3 projects funded by ICSSR and UGC. She has presented her publications in reputed institute in India and abroad, including Birla Institute of Technology and Science. Sir, sorry to disturb, but I think that is more than enough to. Otherwise, I think beyond this, the participants will know me through my session also. Okay. Yeah, thank you so much for being so humble and so gracefully introducing me to the participants here. Thank you. I think I take the liberty now. Sure. Yes. Just one thing I would like to say, my friends, I Yes. will be taking just 1 minute.
In fact, Asia ma'am is a very good teacher, very good researcher, and has contributed a lot in outreach programs. So in fact, she didn't allow me to tell each and everything, but I'm quite sure through her lecture you will be able to know why in fact she interrupted and not allowed me to complete her introduction. So with this, it's over to Asia ma'am. In fact, her session is very interesting, that is related to entrepreneurship. So it's over to you. Thank you so much, Khan sir. Yes, thank you. So, just to add to what sir was saying, to introduce me to all of you, I would like to say that I'm these days, recently, I've started on a project which is called, it's not a project, but it's a program which I organize after every 6-7 months in the Department of Commerce, and it is related to promoting or training the people to become entrepreneur. In fact, I'm helping people to start their own business. So gradually, maybe I'm getting into this field of how to develop or how to help people to become entrepreneur just by giving support to them. Because see, this topic or this issue, or that is entrepreneurship, is gaining momentum these days. We see that everywhere the government, at a state level or central level, with the scenario of related to the job and whatever we have it here, that scenario. So we everybody is just pushing on to that, how to promote more and more entrepreneurship in the country, so that the people in the country, they are not dependent on job and employment. They should be self-sustained, they should be self-employed, because entrepreneurship promotes that self-employment part. So so that we are making the people, more and more people, as job givers instead of job seekers. So let us just go for this session on, and I hope it will be a learning experiences, because now what changes we have seen, that we are seeing that through the new education policy, this paper, that is entrepreneurship, is now promoted to the level that even the teachers at university level especially, they are also motivated to encourage and promote entrepreneurship. So today we will learn that how we, being teachers in different colleges, in different universities, when we are in touch with the youth of the India, because we are directly in contact with them, and that youth is preparing himself or herself for the field to start a business or to start a job. So we must be knowing that how we can motivate or push this youth towards self-employment or towards entrepreneurship. For this, we will have to first realize ourselves that why is this entrepreneurship so important for the present date, that is present state in India. So I'll be sharing with you one of my presentations. So let us just, I hope this is visible. So we can go for this. I hope this is visible to all of you. Yes, ma'am, it's Yes, visible. ma'am. Yes. Okay, so here we start with training as an entrepreneur. First, we will understand what an entrepreneurship and who the entrepreneurs are. So entrepreneurship is, we can say that anybody who takes the initiative to become an entrepreneur by bringing all the factors of production together to create something new. It may be a good or it may be a service. So, for example, we have the factors of production will include the land, the labor, the raw material, the capital, the manpower is skill. Labor means the skilled and unskilled, all kind of human resource that is required. And all those factors, all these factors, they individually cannot perform. They cannot create an output. Therefore, we need one central force who should be doing this, and therefore this is done by an entrepreneur. An entrepreneur is the binding force who has a vision, who has a foresightedness, he has a brilliant idea,
He is I also say that he is a problem solver, because an entrepreneur is a person who looks around him and finds the problem. See, he sorry, not finds, he sees the problem. He can see the problem and he wants to work out, or he wants to overcome, or maybe come up with a solution to those problems. And that solution is either a new product or a new idea, maybe a service, a product or something, which will be helping to solve the problem. For example, maybe so many products we see in the market. These products are the outcome of the existing problem of, or need of the people. So entrepreneurship is bringing together all the factors together in order to uh, produce a solution to the problem, or maybe by doing this he produces a goods or services in the society in order to make a better living for the people. And also better living for the people, easy living, and maybe, quality of life also improves with the use of those goods and services. And in another way, entrepreneurship or an entrepreneur also helps to generate employment, because anybody who starts a business, he tries to assemble all the factors of production. By doing this, he is allowing people to join him and work with him, so that they come out with some results. And for this he is paying to everyone. It may be, it may be his partners, it may be his workers, it may be managers, it can be anybody. So he's also generating employment. So we see that entrepreneurship, it's a creativity, it's a visionary activity. And therefore, how an entrepreneur, by doing this activity in order to fulfill his vision, how does he contribute to the society, or how he contributes to the economy? First of all, he begins with generating some creative ideas. That is something new which is not there, but people do want it. People do have the needs for that. So first he generates, or maybe he develops some good creative idea which he envisions after looking at the problems that are existing all around him. He creates direct and indirect employment, because he is once he is employing all the factors of production, then he is either he is generating employment to directly to the people, or maybe he is buying the raw material, so he is creating another level of employment at that level to the producer of those raw material. He is taking capital, so maybe he is giving services to the banking sector or to the financial sector, etc., etc. So this way he generates employment. Next is talent explosion of professionals and entrepreneurs for better return on investments. That is when he is working into just to there is always a talent. He hunts for the talent. He looks for the best resources, the best manager, the best engineer, the best professional. So there is a talent explosion and therefore whatever money is invested, capital is invested by hiring the best people, best talent. He tries to generate the best return on investment. Uh, by doing all these things, he is also promoting money inflow into the economy, inflow as well as outflow. There is he is helping the market. He is promoting economic development. Uh, Entrepreneurship or the business culture in any economy, it always promotes development, growth, and they change the phase of the economy. They bring into new technology, they improve the quality of life index of the people. They reduce the dependency on foreign goods and services, because they make their economy comprehensive enough or competent enough by producing whatever maybe initially was brought out from different countries. So we can say that maybe an entrepreneurship or an entrepreneur always leads to the creation of wealth in an economy. That is, he creates jobs, he is bringing new investments, he is bringing more foreign money, maybe
you can just check out throughout the country all the big business houses, how they are helping the country to develop. For example, maybe we can take the example of Tata, Birla, Reliance Group, the micro, this Wipro. There are so many big and entrepreneurial heads that contribute such a lot to the economy, to the employment, to the distribution and creation of wealth, to improving the standard of living of the people, and then overall, obviously, it leads to a creation of wealth in the economy. So we cannot ignore. The time has come that we cannot just ignore this entrepreneurial development in the country, because see, if suppose I am taking the example of some big business houses, but if they remain this number only, suppose in a country if there are 10 entrepreneurs, good entrepreneurs, and this number does not grow, it remains 10, and other dependent population is growing, what happens? Everybody is looking for a job, but to what extent will these 10 entrepreneurial groups will be able to cope by providing the jobs? No, they will have to, there will be a limitation, there will be an exhaustion of that. And everybody, when there are no entrepreneurs, who will be generating employment, who will be giving employment? And therefore now we find that we need people who come on that side and they become entrepreneur in order to add to the wealth of the economy, existing economy. And what is about the country these days that why is government promoting? It is, as I said, that in the new education policies, they have introduced the courses in such a way that entrepreneurship is taking the primary position, we find. They are motivating, they are making it compulsory to adopt or to promote entrepreneurship at this level, because this is the stage where students who take the decision for going into jobs or for starting their own business. So why not push them to start their own business, etc. So it is, the unemployment in the country is forcing the government to promote more entrepreneurship. We need to have more job givers, more people who should be giving more and more jobs to others. And, entrepreneurial brains in the country and startup ideas should come up and take the lead roles now. That is becoming more important. So let us see that what is the actual position in the country these days. Before we move on to further discussion, we find that today India stands with the biggest population in the world, with 65% of Indians being the dynamic young population under the age of 35. And why do we call this age group that is under the age of 35, why do we call them a young population? Because see, we find, and because you all are in direct touch with this youth population while we are teaching, or while they are preparing themselves for the field for earning their living. They are so energetic. They are the most energetic and productive section of any society. So a country's ability and potential for growth are determined by the size and strength of its youth population. जो जवान हिस्सा होता है हमारी आबादी का, वो सबसे ताकतवर होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी और जोश होता है उनमें. So this vast resource of young citizen entering the workforce has created demographic dividend, which means that economic growth resulting from the population's age structure shift. It calls for an economic trigger when a country has more hands available to work than more mouths to feed. क्योंकि हमारे पास जो जवान बच्चे हैं वो काम करने के लिए मौजूद है, तो दो हाथ हमारे पास ज्यादा मौजूद है, ना कि हमें जिनको सिर्फ और सिर्फ खाना खिलाना है या फिर फीड करना है. फॉर एग्जाम्पल मे बी अवर रिटायर्ड पॉपुलेशन. So today's young generation are they are innovators, tomorrow's creators, builders, and they are the future leaders also. So we must
we have to focus on them and how to use them potentially in order to add to the wealth of the nation, of the economy. So, but what we see here, some data is I would like to share with you, and that data is that the unemployment level, we have seen that it was as high as 28.26% in 2021 in comparison to 23% in 2018. So, although India witnessed a substantial expansion in the higher education sector, that is from 38.5 million students studying in 2019-20 as compared to 29.2 million students in 2011 and 12. So that means that our general ratio has improved by 7.9% in the higher secondary in these years. I just found a recent document by FICCI, that is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, which summarized that the state of higher education, they said that although India's higher education system contributes about 350,000 engineers and 2.5 million university graduates annually to workforce at any given time, but about 5 million graduates, they remain unemployed. See, such a sorry picture, such a huge number. In spite of getting such high qualification, they remain unemployed. A large number of, amount of literature has also analyzed the mismatch between the education and jobs at the macro level. Because we have seen that over-education, as over-education, when the supply of educated workforce seem to be much more than its demand in the labor market, which leads to very low payment of wages, or maybe leading to wage reduction at the same time. And why do we have this sorry state maybe, we have three peculiar situations that is existing in Indian economy, that is over-education, the skill mismatch in technical education, and the quality skill gap. The first type, let us just have a bit detailed analysis on this. What is over-education? At the individual level, over-education is defined as a form of skill gap, wherein overqualified person with a tertiary education are hired for job or activities that do not require such qualifications. So because of oversupply of people or persons for such jobs, higher education is used as a transparent and easy screening device by employer. So they just put a minimum qualification cutoff, and then they just try to screen or maybe filter out the required. But still, we find that therefore people holding high degrees, they compromise for the jobs for which they have not they have not been trained, or they have not educated themselves. For example, maybe we can say a postgraduate in economics, maybe he is hired as a bus driver, or maybe he is hired as a truck driver. And we see so many people, so many auto drivers, they are qualified, they are graduate, postgraduate, but still they compromise onto that. The second very peculiar situation that is existing in India is a skill mismatch in technical education. That is, it is specifically where people who have received higher education in technical fields, maybe in agriculture, engineer, or maybe technology, they end up working in the jobs that do not require that training. For example, we can say that an agricultural scientist is appointed as the director of a firm. Though he was not trained to be a director, he was trained to be an agricultural scientist. But this skill mismatch is when the person hired, he qualifies differently from the requirement of a person. And I'm sure, do you agree with me? Do you witness this kind of things around you? आप देखते हैं इस तरह की चीजें अपने चारों तरफ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have seen most of the VCs in some universities are from army areas, from army ranks.
after their retirement. Now they are VCs of universities. See, मतलब आप देखिए ना कि किस तरह से, and this is not happening in the developed countries. You know, जो सही क्वालिफिकेशन है, जो सही ट्रेनिंग है, उसको सही जगह पे लगाना चाहिए. I remember, once there was, everybody should be going for Microsoft or should be going for software engineering, and then बाद में जब डिग्री मिल गई उसके बाद अगर जॉब नहीं मिली या एमबीए भी कर लिया, एमबीए में क्यू थी बहुत लंबी, हर आदमी एमबीए करना है, and then after that they are working compromising to different nature of jobs, to different वो. तो ये हम लोग कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट या बच्चा जो है इतने क्वालिफाई, सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद वो कॉम्प्रोमाइज करता है. And then third is the quality skill gap. That is, it is when the firms, they hire for jobs that require a person with a tertiary education. Tertiary education, they complain that the quality skill is inadequate for such activities. So as a consequences, while persons with higher education, they get hired for such jobs, they acquire significant training adding to the cost of the firm, and then this can be seen as the poor quality of existing higher education system in India. Maybe, for example, a person who is graduate in commerce must be trained in the firm's accounting procedure. किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट पे या अकाउंट की पोस्ट पे रख दिया गया, वो सिंपली कॉमर्स ग्रेजुएट था, उसको इतनी ट्रेनिंग नहीं थी, फिर उसको ट्रेन करने में उतना पैसा खर्च करना पड़ता है. So we find that the share of the salaried, एक और सिनेरियो और था कि there is a jobless growth. इन तीन specific उसके अलावा there is a jobless growth that can be witnessed in our country. This is a very major anomaly which we are facing since 2003 itself. In the that is, it is, and the rate is 7%, more than 7% jobless growth. Now what happens that 70% of the workforce is still engaged in the formal or unorganized sector, so including self-employment and micro, small and medium enterprises, which do not provide a very stable or assured platform. So despite the variety of initiative and schemes for skill development like Skill India Mission, National Skill Development Mission, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, etc., youth employment, unemployment, they persist. So आपने बहुत सुना होगा कि वो फ्रीलांसर है. जॉबलेस ग्रोथ का एक एग्जांपल ये बहुत अच्छा है. He is a freelancer journalist, he is a freelancer photographer. That is because they are qualified, they are well trained in their domain, and they don't want to waste that talent. They are looking for job, and for the time being they are not getting the job, but they want to keep themselves in practice, so they are not earning anything. कभी कभार उनको कभी कुछ फीस मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई रेगुलर बेसिस पे इनकम नहीं है, तो वो फ्रीलांसर के नाम से अपने को प्रेजेंट करते हैं. तो इसमें जो है इस तरह ये this problem is so colossal, so huge that it cannot be overlooked, and therefore the big question arises on the quality and the pedagogy also. Pedagogy means the methodology, जो process है, जो तरीका है हमारे of our primary and higher education system, and the quality of technical and vocational education and training infrastructure. So I think that the general education system is still too focused on grades and marks and careers instead of being, oriented towards innovation and bringing something new, or maybe creativity, or maybe entrepreneurship also. So ये सारी जो समस्याएं हैं उनको मद्देनजर रख के, what we find, that is maybe we can say that here I've just brought some data before you that while investment in human capital are very critical to realizing the sustained economic growth, higher education and technical vocational skill can improve the competitiveness. Actually जो problems हैं इनका मसला कैसे निकाला जा सकता है, इनका solution. For example, I said that we are too much grade centered.
marks. A student who gets admission in, suppose in class 1, from then he is conditioned that marks अच्छे होने चाहिए, 90% होने चाहिए, 100% होने चाहिए, and therefore they are so much grade and मार्क उस पर इतना फोकस हो जाता है कि जो उनका स्किल है, उनका जो टैलेंट है, उसको इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द स्किल डेफिशिट इन इंडिया, इट रिक्वायर्स अ policy as well as institutional framework that is based on partnership, maybe between the government, industry providers of educational and training services, and the civil society. This I emphasize more on civil society, because this mindset has to be changed from we have to start from the ground level. That is from the people. माँ बाप का जहन बदलना पड़ेगा पहले. Civil society is not only the students, it is the parents, it is the students, it is the teachers, it is everybody. So first we have to change this mindset कि नहीं सिर्फ मार्क्स पे ध्यान देना है, और इसमें हमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंडस्ट्री as well as the people who are in the society, they all have to work together. That is, we have to shift our orientation or our focus only on marks. We have to shift it to creativity, to check on the actual talent of. It's not that every student or every child has a potential to be an entrepreneur. No, but let us give him an opportunity to nurture that talent or nurture that skill if he has or if he can. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये एक पूरा ही चेंज लाने की जरूरत है, पूरे फ्रेमवर्क को बदलने की जरूरत है, और सबको मिल के ये चेंज लाना पड़ेगा, अदरवाइज थिंग्स विल रिमेन इनकम्प्लीट. It also is important that we blend the theoretical and the conceptual knowledge together at university levels. What I always say that in the last semester, पढ़ाई या सब्जेक्ट या पेपर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए. Throw them on the field, let them learn. And one thing I tell you, you just be knowing also कि अब जब जॉब के लिए लोग जाते हैं, पहले जॉब होता था तो 6 महीने पहले उसको ट्रेनिंग में रखा जाता था, ठीक है. The job has been, the company calls them, and for first 4 months or 6 months they keep them under training. What happens once they are under training, they were made to learn that process क्या है काम करने का. What happens here, अब यहाँ पे क्या होता है, अब आजकल no company wants to do that. Why? Because they say that okay, I want you to be joining my जो भी आप वैकेंसी ज्वाइन करो, आप दूसरे दिन से हमें रिटर्न देना शुरू करो. हम आप पे इन्वेस्ट क्यों करें? 6 महीना हम आपको तनख्वाह सिखाने के लिए क्यों दें? आप सीखे सिखाइए आइए मेरे पास. वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट मनी. एंड दिस ट्रेंड इज वी कैन विटनेस इट ऑल अराउंड. अब बच्चों को पहले से वो मानते हैं, ठीक है आपने इंटर्नशिप कितने जगह करी. जिन बच्चों ने इंटर्नशिप या फील्ड वर्क करा होता है उनको जल्दी मौका मिलता है. जो बच्चे सिर्फ डिग्री लेके जाते हैं उनको पहले मौका नहीं दिया जाता है. जैसे जाइए आप 1 साल 2 साल फील्ड वर्क करके आइए. And this is happening in developed nations. We have, इधर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है. That is in Switzerland, one of the university, École Hôtelière de Lausanne. Lausanne में है ये, स्विट्जरलैंड में. One of the leading university, hospitality management university. What they do that जो last semester होता है उसमें वो बच्चे को प्रोजेक्ट जो देते हैं, प्रोजेक्ट बनाने को 2 ऑप्शन देते हैं. either you make a project and you just present yourself and you go to the field, 3 महीने आप काम करिए, उसके बाद उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए. दूसरी चॉइस ये दी जाती है कि you go and आपने जो अभी तक के सीखा है उसके बेसिस पे आप जाइए और अपना एक बिजनेस स्टार्ट करिए. And that student is given all the support. बैंकर्स का सपोर्ट दिया जाता है, मार्केटिंग का सपोर्ट दिया जाता है, जहां जहां उसको जो नॉलेज की जरूरत होती है, all that support is provided to him. Okay, वो सारा सपोर्ट दिया जाता है. और उसके बाद जब सेमेस्टर खत्म होता है तो वहां पे उसको जो डिग्री मिलती है, उस सेमेस्टर के जो मार्क्स मिलते हैं, उसने जो बिजनेस स्टार्टअप करा होता है उसके बेसिस पे उसको मार्क्स अलॉट होते हैं.
ठीक है. सो अगर प्रोजेक्ट उसने ऑप्ट करा है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे मार्क्स होता है, प्रेजेंटेशन होता है वगैरह वगैरह. और अगर उसने स्टार्टअप ऑप्ट करा है तो वॉट एवर ही हैज एस्टैब्लिश्ड, वॉट एवर ही हैज डन इन अ स्मॉल वे, उसको उसके बेसिस पे मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, असाइन करे जाते हैं. एंड देन बट द रिजल्ट इज दैट in a way we get established 2 or 3 businesses or men, and they started with a trial. और जब ये शुरू करा गया था उसके बाद इसका नंबर, इसकी डिमांड इतनी तेजी से वहां पे मल्टीप्लाई हुई. so many students because they had a good opportunity कि एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम यूनिवर्सिटी दे रही है. So this should be it is a revolution that was brought into that country, and then gradually it is spread and many students are now opting for this kind of. So maybe I always propose that why don't we duplicate it in our universities and we give an opportunity that nahi aap jo hai student hamare iska ye opt kare. And we can also say that we can blend our theoretical and practical knowledges, and we can bring some training programs at college level and give the opportunity to all those who want to become an entrepreneur. We can provide them some training programs. For example, what I am running in my commerce department, I will be abhi hum aapko baad mein batayenge iske bare mein detail, that how we can help the students to enlighten themselves that yes, it is, they have an option and they can go in for a career for entrepreneurship. क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम इस तरह से है कि anybody who thinks of starting a business, he is considered as a useless person at university level. ये शुरू से ही माइंडसेट है. स्कूल्स में वी आर गिवन एन ऑप्शन, ठीक है आप क्या लेंगे, साइंस लेंगे, मैथ्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे, बट एक एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉपर फोकस नहीं कराया जाता है. अगर वो कॉमर्स भी लेता है तो मोर प्रायोरिटी इज ऑलवेज बाय द पेरेंट्स कि सीए बनिएगा या सीएस बनिएगा, या ये नहीं होता है कि नहीं आप बहुत अच्छे से अपना कारोबार शुरू करिएगा. उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है. ठीक है. इसी तरह से एक सीएसआर का वो है, तो सीएसआर मैंडेट्स मस्ट आल्सो बी लिबरलाइज्ड. जितनी भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है उनका जो सीएसआर का पैसा है वो कहीं ना कहीं उनको इसको एंटरप्रेन्योरल एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए यूनिवर्सिटीज को और इनको, जिससे कि इस तरह की वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स कराए जाए, सो दैट students are they are promoted for that. And we can say that India has a very large demographically diverse population, but investment in science, technology and innovations are not yet translating into the desired growth reality. So realizing that innovation-led entrepreneurship, development holds promise for growth, the government has taken major policy initiative. Let us see that what are those policy initiatives. But before going into that, let us first just think on this, that what is entrepreneurship is. Is it a skill or is it a science or is it an art? ये आपको ही डिसाइड करना है, because see there I give you one of the example that here when I go to banks and I talk to them about entrepreneurship, गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं जो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. वो ये कहते हैं कि हाँ लोगों को हमारा एक टारगेट होता है, इतने लोगों को ये स्कीम से फायदा पहुंचाना है, ठीक है. और उसके कुछ दिनों के बाद एनपीएस क्रिएट होते हैं. व्हाट इज एनपीएस? इट इज द नॉन परफॉर्मिंग असेट. दैट इज जो लोन वो लोग लेते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो लोन लेते हैं वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं और वो लॉसेस में चले जाते हैं. तो उन लॉसेस को हम लोग एनपीएस बैंक वाले बोलते हैं. सो व्हाट दे से दैट नहीं, इसका मतलब ये है कि जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनको लोन दिया जाए, लेकिन लोन देने से पहले उनको ट्रेन करा जाए. क्योंकि सी वन थिंग यू प्लीज रिमेंबर that there are two aspects of doing business. One aspect is that you have to be very good and very creative and very visionary in the product or service that you are making. पहला एस्पेक्ट तो ये कि जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं या सर्विस जो आप बनाना चाह रहे हैं, आपको उसमें बहुत अच्छी सी महारत होनी चाहिए. द सेकेंड एस्पेक्ट इज, वो प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, आप बहुत एक्सपर्ट है, एक इंजीनियर है उसको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत एक्सपर्ट है, तो पहला पहलू हो गया. बट इफ दैट इंजीनियर वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस फॉर दैट सॉफ्टवेयर ओनली जिसपे वो एक्सपर्ट है,
लेकिन उसको इस सॉफ्टवेयर को मार्केट तक लाना नहीं आता है. That means, no doubt, he is expert in making the product, but he is lacking in the entrepreneurial skill. जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक सॉफ्ट स्किल होती है वो उसको नहीं आती, उसको कारोबार करना नहीं आता, उसको ये नहीं पता है फंड्स कैसे रेस करें, उसको ये नहीं पता, उसने पढ़ाई की बातें तो कर ली या किसी आदमी ने अपना एक प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन इस प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे पहुंचाए, फैक्ट्री कैसे खड़ी करे, ये सब नहीं आता है. तो हियर we can say yes, entrepreneurship, it is a soft skill. It may be a science or an art. Yes, it is a blend of both, and we need to work on both the dimensions. जब प्रोडक्ट को बनाना नहीं आना है, हमें प्रोडक्ट को बेचना भी सीखना है, and therefore we do need to train people to become good entrepreneurs by inculcating in them the entrepreneurial soft skills. वो देना जरूरी है. Now let us see कि गवर्नमेंट कितनी मेहनत कर रही है. बहुत मेहनत कर रही है. That is, they are providing hand holding, they are providing funding and incentives, they are also providing incubations. Hand holding किस तरह से? They are providing very comprehensive legal support, intellectual property rights, exit process, everything is framed. सारा एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, आपके पास पूरी गाइडलाइन और वो हेल्प करते हैं, और इनके ऑफिसेस होते हैं जहां आप जाइए और आप पूरी हेल्प ले सकते हैं. सेकेंड इज योर फंडिंग एंड इंसेंटिव्स. फंड्स गवर्नमेंट, आप अगर DIC, दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, वो आपको बताएगा कितनी स्कीमें हैं, कितना इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर मिनिमम इंटरेस्ट पे लोन सिड भी है आपका. बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्रीज ऑफ उनके फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज के फाइनेंशियल आउटलेट्स हैं जो बिल्कुल मिनिमम आपके उस पे टैक्स पे देते, सॉरी इंटरेस्ट पे लोन देते हैं. देन देयर आर टैक्स बेनिफिट्स एंड टैक्स हॉलीडेज फॉर, देन इन इंक्यूबेशन दे आर नर्चरिंग एंड प्रमोटिंग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं. देन दे आर नाउ दे आर मोटिवेटिंग द academia, universities also to have incubation centers, जहाँ पे incubation क्या होता है, जहाँ पे छोटे बच्चे को मजबूत किया जाता है. तो जो इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटीज लेवल पे एस्टेब्लिश करे जाते हैं, वहाँ पे जो बच्चे आगे एस्पायर करते हैं टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, उनको नर्चर किया जाता है, उनको सारी हेल्प दी जाती है, उनको सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है टू डू दिस. सो दिस वे गवर्नमेंट इज टेकिंग strong initiative to they are taking a strong initiative to support the people, support the create an entrepreneurial environment so that they can but what I believe, और इसी तरह से ये है हमारी गवर्नमेंट की और सारी स्कीम्स हैं, that is Startup India and many मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री योजना, जैसे कि ये है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल सपोर्ट टू MSMEs in Z certification schemes, etc., etc. This is a long list. Actually, with all this, whatever the government is doing, it is trying to now create a bubble, an environmental bubble or environmental ecosystem which is very friendly for those who want to start their own business. So through these schemes, what they are doing is they are just trying to provide a hand-holding facilities by simplifying all the procedures. Paperwork को काफी simplify करा जा चुका है, सारे procedures को काफी simplify करा जा चुका है. And not only hand-holding, they also provide the financial supports. They provide tax incentives, tax benefits. They provide the industry academia partnership, incubation centers, etc., etc. ये सारी चीजें provision government इसमें provide करती है. But do you think that this is sufficient? आप बताइए, क्या गवर्नमेंट की इतने मेहनत करने के बाद क्या ये सब काफी है? आपको लगता है? मैम, जब तक एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड नहीं डेवलप होगा तब तक ये स्कीम भी सारी काम नहीं कर सकती है. ओके, आई अग्री विद यू टोटली कि जब तक के एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट,
लेकिन एक जब तक जो मैंने कहा सिविल सोसाइटी का जो बहुत बड़ा रोल होता है, सिविल सोसाइटी का, दैट इज द पीपल लिविंग अराउंड, जब तक हम लोग का रोल नहीं चेंज होगा, माइंडसेट नहीं चेंज होगा, एक एटीट्यूड नहीं चेंज होगा, बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ये बात तो एक पक्की हो गई। एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू से? Anything else? See, what I just shared Ma'am, with you. awareness regarding these schemes to the people, as if they don't know about the schemes, how they will be able to get benefit out of it. Very good, very good. Because many people, they are not aware कि बैंक वालों के पास या DIC के पास या गवर्नमेंट के पास कौन सारी स्कीम्स है। तो see, I think a change has to be brought through and through from every corner. तो पहले हम शुरुआत करते हैं स्कूल लेवल पे। आई थिंक द फर्स्ट इनिशियल स्टेप हैज टू बी शुड बी टेकन देयर इटसेल्फ। एक एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट, एक एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन डेवलप करने के लिए स्कूल लेवल पे इस पेपर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नॉट इन अ थ्योरेटिकल वे बट इन अ प्रैक्टिकल वे। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, आप लोग स्कूल्स में जब पढ़ते थे तो छोटे जब हम लोग स्कूल में थे तो फेट ऑर्गेनाइज कराई जाती थी। डिड यू हैव दोज एक्टिविटीज? Yes, ma'am. है ना? फेट क्या होता था, हम बच्चों से ही बोला जाता था स्टॉल लगाने को। And practically, at that time we were not taught that we are into, being trained as entrepreneur. लेकिन एक वो डेवलप कराई जाती थी हम लोग के अंदर, एक कॉन्फिडेंस लेवल दैट yes you can procure things, you can make them and you can earn money out of it. And maybe that money was collected back, और जितनी कॉस्ट हम लोग की आती थी वो दे के बाकी लेके चैरिटी में दे दिया जाता था। बट आई थिंक इफ दीज काइंड्स ऑफ, एंड IB बोर्ड में ये एक्टिविटीज हैं हर क्लास में बचपन से। They make it a part that okay, you if you want to become an entrepreneur, do you have some idea, maybe some goods or maybe some services, so how will you do it? तो एक एक्टिविटी डे हो जाता है, उसमें बच्चे अपने हाथ से बनाई हुई कोई भी चीजें बनाते हैं और उसको बेचने की कोशिश करते हैं। एंड देन दे आर टॉट हाउ टू डू कॉस्टिंग, दे आर टॉट हाउ टू मेक प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, और अगर इस पे टैक्स देना है तो कितना टैक्स का मतलब क्या होता है, फिफ्थ क्लास। So this change has to be brought in first of all. This is my personal suggestion, because I have seen that बच्चे जब इस तरह से engage होते हैं इन सब एक्टिविटीज में तो वो प्रैक्टिकल करने के बाद दे गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये किया जा सकता है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट रॉन्ग ऑल्सो, इट्स नॉट रॉन्ग ऑल्सो। सिमिलरली एट हायर एजुकेशन लेवल जो यूनिवर्सिटीज लेवल पे होता है, जो जैसे मैंने स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी में देखा, इट इज ऑल्सो इन USSR ऑल्सो, वहां पे US में भी इस तरह से काफी यूनिवर्सिटीज है। दे गिव एन ऑप्शन एंड इफ दे गो फॉर अ स्टार्टअप, तो व्हाई कांट वी हैव दिस इन इंडिया, दैट लास्ट सेमेस्टर दे शुड बी थ्रोन इनटू द फील्ड दैट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू स्टार्ट अप योर बिजनेस, योर स्कोर्स विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या करते हैं। और ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को पूरा सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो इंक्यूबेशन सेंटर होगा तो बैंक वाले भी वहां पे सपोर्ट देंगे, आपका मार्केटिंग से भी सपोर्ट दिया जाएगा, डिजाइनिंग, एडवर्टीजमेंट, एवरीथिंग एवरीथिंग दे विल बी कुशन्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, सो दैट जब वो शुरू करते हैं छोटे से स्केल पे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस, उनकी लर्निंग बढ़ती है। So because see, nowadays having a degree and then running around for looking for job कि देखिए मैंने ये पढ़ा हुआ है, नहीं, इसके बजाय आप अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं आप इस तरह से। तो यूनिवर्सिटीज स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी तक के तो ये सारी चीजें जो है ये डेवलप करी जा सकती है, and they should be, and I think new education policies में government has introduced already, क्योंकि semester system में vocational courses, vocational training programs, इन सबको जो है वो सारा दिया हुआ है, importance दिया हुआ है, weightage दिया हुआ है, points दिए हुए हैं, and therefore they have to। and इसी तरह से इनको गवर्नमेंट को देखिए पॉलिसीज बहुत सारी हैं, किसी ने भी बताया कि अवेयरनेस नहीं है, तो ये जो है इनको अवेयरनेस जनरेट करना
simplify और ज़्यादा program करना, and all these things have to be, you know, promoted and strengthened by the government. और कोई भी policies जितनी भी हो जाए, अगर जब तक कि वो अच्छे से implement नहीं होंगी, till they are not implemented and executed in the proper way, we cannot see the face of success. You know, we can always say that एक ही चीज है शुरुआत करके असफल होने से बदतर है, वो है शुरुआत ना करना. So I think we must, you know, get started with this part. That is, let us start, let us at least begin. So I think that is the reason why I say that training as an entrepreneur, it's not impossible. It is no more impossible. It is very viable, and it is the requirement of the day, requirement of the hour, that our next generation who are there with us, you know, they should be moving, they should be at least exposed to this field कि नहीं आप कर सकते हो. और जब हम उनको exposure देंगे और उनको confidence देंगे तो वो करेंगे, and तब हमारे उनके वही role model बनेंगे आगे generation के लिए. और इसमें मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने अभी कहा था कि what program I am running, it is a sure program that is stimulating urban renewability through entrepreneurship. It is a program which I have signed an MOU with a US university. ये program वहाँ पे एक optional paper की तरह पढ़ाया जाता है. And here, which I brought it and I have implemented in Commerce Department, Aligarh Muslim University. Here what we do, all the participants who are non-student, maybe student, maybe non-student, the students basically I invite from engineering background, medical background, या फिर non-commerce जिनको कारोबार करने की बिल्कुल भी सलाहियत नहीं है, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट है, उनके पास आइडिया है, उनके पास सर्विस है, कुछ है जो वो बेचना चाहते हैं बना के. इसी तरह से my participants are also from the underprivileged class community who have you know, they are very talented in making their goods and services, लेकिन वो मजदूरी पे उसको बना रहे हैं दूसरे के लिए. वो खुद बना लेते हैं पूरा, लेकिन उनके पास ना तो कैपिटल है, ना रिसोर्सेज है, ना उनके पास कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बैंक जाने में डर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट की योजनाएं नहीं पता है. तो व्हाट वी डू, इट इज अ 3 months प्रोग्राम, 3 महीने चलती है वर्कशॉप, और हर सेशन संडे संडे चलता है. And they are educated on all these grounds. Banking, तो banking जो है वो बैंक की टीम आती है पढ़ाने. No teachers are teaching them. Marketing, it is people from the field, marketing field, they come and teach. If it is, you know, there are so many things, you know. इसी तरह से if it is DIC, जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट की योजना है, तो सिडबी ने एक सेशन आके लिया. माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है, आप हमसे कैसे हेल्प ले सकते हैं. Now what happens, और पूरे ये 12 संडे चलता है. फिर एक पिचिंग डे होता है जिसमें कि पिच कराते हैं हम लोग कारोबारियों से मिलवा के. सो what happens, we find that gradually, जैसे जैसे 12 हफ्ते खत्म होते हैं, the participants, they are not only, you know, learning things, they are not only gaining lots of knowledge, they are getting, I find them getting more confident. They become so confident, they say that शुरू में जब आते हैं कहते पता नहीं मैम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, but on the 10th week I see on their faces and they say नहीं हो जाएगा, it's not that difficult. There is a legal session जिसमें corporate lawyer आते हैं, and in that session we get them registered on the Udyam portal. If they need GEM portal, they are registered there. They are made aware of all the legal requirements to do a business. If they want to, we get them registered. We get their, you know, उनका brand जो है वो decide हम कराते हैं. So there are so many participants who already, you know, program खत्म होने से पहले वो अपने को register भी करा लेते हैं. So this way, we see that और जो last के वो होते हैं weeks होते हैं, उसमें we go for pitch-in. Pitch-in में what do? We invite some established entrepreneurs from the city. We make them interact with our participants. They talk, they discuss, and sometimes, you know, these entrepreneurs जो well established होते हैं, वो इनको support provide करते हैं. Maybe अब मुझे भी नहीं पता होता है क्या सपोर्ट वो दे सकते हैं एक दूसरे को, बट व्हेन दे मीट, दे इंटरैक्ट, जिसके पास कि हमें जो है आप
मे बी रॉ मटेरियल के सोर्सेज बता दीजिए, आप हमें फला चीज बता दिए, लेबर इसकी कहाँ मिलेगी, मे बी समबडी यू नो, कुछ एंटरप्रेन्योर किसी के आइडिया से इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो कहते हैं ठीक है हम आपके इसमें इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना पैसा थोड़ा सा लगाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ पिच इन सेशन वेयर they meet, they talk, they network, they handhold, because in doing a business nobody you know. And majorly मैंने देखा है इसमें participant हमारा engineering का बच्चा बहुत आता है, because they are, by the time they come to the last semester they are you know well established with all the good ideas of their product or software or something. और उनको पता है, लेकिन उनको ABCD नहीं पता है बिजनेस करने की, because they have been a science student, they have never been taught. So I also recommend, I would recommend to the government of India UGC कि आप entrepreneurship का एक पेपर साइंस और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन सब में इंट्रोड्यूस करके कंपल्सरी करिए, so that they should know that if they do not opt to go for a service in their professional domain, if they want to have their own business, so basics तो कम से कम उनको पता होना चाहिए ABCD. तो इस तरह से, और इस प्रोग्राम में इसी तरह से हमारे पार्टिसिपेंट अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के काफी होते हैं, जो जिनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है, वो अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर देते हैं. So you know it's we cannot say that it is a pure science. Entrepreneurship is a pure science और उसको सिर्फ पेपर पास करके पढ़ के और अच्छे ग्रेड्स के साथ ही हासिल किया जा सकता है. No, it is not that. It is you know you must be knowing the conceptual and theoretical part, but at the same time you should be having the art, और या ये कहना चाहिए उसको कैसे अच्छे से करा जाए, उस चीज का हुनर भी डेवलप करना बहुत जरूरी होता है. For this you can be trained, students or anybody that can be trained to you know develop those soft skills of evolving as an entrepreneur. So that is all about what I had to say about why I feel that it is important that we must go on for more and more training program to promote entrepreneurship, because it is a soft skill that needs to be nurtured and developed in addition to the theoretical and conceptual knowledge. Otherwise, you know, because we need more and more entrepreneurs, आज का जो scenario है हिंदुस्तान का, हमें ज़्यादा से ज़्यादा entrepreneurs चाहिए, जिससे कि हमारे क्या job givers ज़्यादा हो, job seekers कम हो. So that's all from my side, but if you want the discussion, I open the floor for discussion. If you want to ask or discuss something or share some of your experiences, most welcome, please. May I speak? Please, sure, Manjeet. हम जैसे आपने बात किया ना, अंडर प्रिविलेज सेक्शन की आपने बात की है, जी. तो आप उनको पहले कुछ अवेयरनेस देते हैं या उनके एरियाज में जाते हैं, फिर आप उनको कैसे अवेयर करते हैं कि ऐसा कुछ प्रोग्राम्स हमारी यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं? हाँ, obviously I have to, you know, I have to go. When I started this program, I went door to door to, you know, all the, maybe trying to cover the NGOs all around my universities, to all the university, other colleges, private colleges यहाँ पे हैं जो कि vocational course कराते थे, तो vocational participant जो उनके admission enrolled student होते थे, because they are doing vocational training maybe in food and craft और इस तरह के उसमें, तो उनको अपना business करना है छोटा मोटा, तो वहां से मैंने participants को motivate किया कि नहीं आप आइए, आपको हम सिखाएंगे कि कैसे कारोबार किया जाता है, क्योंकि ठीक है आप प्रोडक्ट बनाना तो सीख लो, लेकिन आप इसको जब बेच नहीं पाओगे तो फायदा क्या है? फिर वही होगा कि अल्टीमेटली कोई और जो इसका कारोबार कर रहा होगा वो आपको मजदूरी देगा इस चीज को बनवाने का, फिर आप कहोगे पर पीस मिल जाता है, लेकिन आप अगर मेहनत पूरी कर लोगे और कारोबार अच्छे से करना सीख जाओगे तो आप इसमें मुनाफा कमा के अपना कारोबार कर सकते हो. तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दे आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है, उन्हीं ने बस 10वीं भी नहीं पढ़ी होती है, लेकिन वो हुनर है उनके हाथ में, वो माल बना रहे हैं और माल बेच भी रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो बेच रहे हैं उसमें नहीं फायदा है क्या नहीं है उन्हें नहीं पता. जैसे कि यू नो बुटीक्स आजकल घर घर में हर लेडी समझ रही है कि वो बुटीक चला लेगी, ठीक है, हम सूट्स बेच लेंगे या फिर हाउस होल्ड आइटम जैसे चादरें हैं, पर्दे हैं, टेबल कवर है,
You also must be finding so many ladies are doing it at home from home. ठीक है, बट देन आई यूज टू गो टू देम, और फिर आप कैसे कॉस्टिंग करती हैं? पता चला उन्होंने कहा कि मैंने इसको सपोज 100 रुपए की चीज खरीद के लाई और 150 की बेच दी, तो 50 रुपए में आपने क्या क्या जोड़ा? आपने क्या बिजली जो आपने, क्योंकि घर से कर रहे हो तो बिजली आपकी फ्री, आप खुद कर रहे हो, आप लेने गए, आपने किराया जोड़ा नहीं। सो यू नो कॉस्टिंग प्रोसीजर ज्यादातर फ्लॉड होता है। या फिर मतलब टेक्निकली यू नो थिंग्स आर नॉट दैट, और उसमें कुछ आपने इनोवेटिव वो नहीं जोड़ा है, तो कुछ दिन तो आपके लिहाज में आसपास के लोग लेंगे। जब तक आप बुटीक का जो एक्चुअल कंसेप्ट है, यू डोंट ऐड न्यू डायमेंशन टू द प्रोडक्ट, वो लॉन्ग रन में नहीं चलता है बिजनेस। तो मुझे जाना पड़ता है। हाँ, ऑब्वियसली प्रोग्राम शुरू होने के 1-2 महीने पहले से आई स्टार्ट टेकिंग माई राउंड्स टू द प्लेसेस वेयर आई फील कि हाँ यहाँ अंडर प्रिविलेज क्लास होगा, अंडर रिसोर्स्ड क्लास होगा जो, and then I invite people from all around city, so it's a sort of community development program also, to develop your community all around the university, जो आपकी यूनिवर्सिटी को एक कंट्रीब्यूट करना चाहिए कम्युनिटी बिल्डिंग में भी। तो ये एक उस तरह से ये उसको भी केटर करता है ये प्रोग्राम मेरा, कि we help in helping the people living in community around the university who need this kind of help. तो हमारी कॉमर्स की नॉलेज से अगर किसी को फायदा हो जाए सिर्फ नॉलेज से, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है, आसान काम क्या हो सकता है? And we have really helped. doing a great job, ma'am. वैसे we have helped. नहीं, we have helped many people, how there many was people have got benefited till date? अराउंड 3 प्रोग्राम, हमारी 3 वर्कशॉप्स हो चुकी हैं। वी आर रनिंग इट 2.5 साल से शुरुआत करी थी। तो अप्रोक्सीमेटली 173 और 176 ऐसे पार्टिसिपेंट निकल चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं इस प्रोग्राम को। और हम लोग ने 25 से 30 कारोबार स्टार्ट करा दिए लोगों के स्क्रैच से बिल्कुल, जिसमें कई लोगों को बैंक का लोन था वो दिलाया गया। रजिस्ट्रेशन तो बहुत लोग करवा लेते हैं वहीं पे हाथ के हाथ, ट्रेडमार्क वगैरह एस्टेब्लिश कराते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज दैट ये जितने लोग बिजनेस सीखना चाहते हैं करना, उनको सिर्फ अकेले एडमिशन नहीं मिलता है। यहाँ पे हम एडमिशन देते हैं अपने कॉमर्स के बच्चों को भी, जो पीजी लेवल के लास्ट सेमेस्टर में होते हैं या मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में होते हैं, दे आर सीनियर स्टूडेंट्स। तो ये जो पार्टिसिपेंट क्योंकि अनएजुकेटेड भी हैं या साइंस बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग के, दे डू नॉट नो एबीसीडी ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉमर्स। तो जो भी यहाँ क्लास में पढ़ाया जा रहा है बैंकर आके बैंकिंग के बारे में, तो कई चीजें इन लोग को एकदम से समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे हमारे कॉमर्स के बच्चे भी होते हैं जिनको मैं पार्टिसिपेट कराती हूँ। दे एक्ट एज अ कंसल्टेंट, दे फैसिलिटेट देयर लर्निंग। जो चीज वो जैसे सपोज किसी को लोन चाहिए, अब वो बैंक जाएगा, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बैंक का फॉर्म कैसे भरेगा, प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाएगा, हम लोग इन्हें प्रपोजल बनाना सिखाते हैं। तो इसमें मेरे कॉमर्स के बच्चे उनको हेल्प करते हैं। जहां जहां ये अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों को हम वो मौका देते हैं कि आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है आप उसको प्रैक्टिकली कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। तो डू इट हेल्प पीपल डूइंग दिस वर्क एंड यू विल बी लर्निंग, यू विल बी, जो आपने बुक में पढ़ा था कि अकाउंट ऐसे खुलवाया जाता है, अब जाइए खुलवाइए इनका अकाउंट। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट ऑल्सो। तो मे बी वी असाइन हर एक कॉमर्स के बच्चे के अंडर में हम 2 एंटरप्रेन्योर जो बनना चाह रहे हैं उनको असाइन कर देते हैं। So this way it is, a two-way process for my student also, a learning process where they are transforming their theoretical into practical part. और इसी तरह से जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको इस तरह की हेल्प मिल जाती है। जिनको इन बच्चों की हेल्प नहीं चाहिए होती, वी डोंट फोर्स देम, बट जिनको चाहिए होती है वो लेते हैं, बहुत अच्छे से हेल्प लेते हैं। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, Rizwan this side. I think you remember हाँ. me. Yes, Rizwan sir. You taught me, I think, in 2007 and 8. I'm your student. Oh, that's great. So can you switch on your camera so that at Yes, least... ma'am. Sure. Oh, Rizwan, I remember. हाँ. So, अभी ma'am, right now, PhD भी करी है हमारे yes, ma'am. PhD complete कर ली थी, and I am in the Chandigarh University as the Oh, very academic coordinator here and the assistant professor. very So, good. Very
I need to tell you one thing that as per the NEP 2020, जो आपने एक बात कही थी कि इंजीनियरिंग में इंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, तो एज पर NEP 2020 हमने ओपन इलेक्टिव में जो इनकी गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत जो है इंटरप्रेन्योरशिप हमने दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू मैम, ये सेंटर हम कैसे अवेल कर सकते हैं इफ वी वांट टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग इन आवर यूनिवर्सिटी? What this program? यस। ये प्रोग्राम देखिए, I went to US. You had to get trained. I had to get trained and learn the things because it's a long process. It's a 3 months program. और फिर हमारी यूनिवर्सिटी ने उनकी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन करा, एंड द ओनर इज ओनर ऑफ द प्रोग्राम, शी हैज टू बी, तो उसका पूरा वो है, तो मे बी आई लेट यू नो, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है। उसमें जो है पूरा एक प्रोसीजर है, एंड इट टुक आई थिंक मोर देन 2 years because this was the first time that they gave it out of USA to anybody. Okay. But they are giving you only their model. Yeah. Uh-huh. We actually, whenever you start these kind of things, you need a center basically. So introduce the things. As you told us, we need to just attract the students regarding that, or told them about the entrepreneurship. इसमें रिस्वान एक चीज है, you are at Chandigarh University. Yes, ma'am. So you know the compulsion of this program is that it has to be the commerce department, because this student is a compulsory component. ये जैसे वहां पे इस प्रोग्राम को एंटरप्रेन्योरशिप एक ऑप्शनल पेपर इसी तरह से पढ़ाया जाता है, मतलब जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप पेपर ऑप्ट करते हैं उनके अंडर में एक लैब दी जाती है। वो लैब क्या होती है, ये जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लोग, ये आप उनको सिखाइए। मैम एक्चुअली वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी हियर, जनरली ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में अब है कि हम लोग लैब प्रोवाइड कराते हैं, एंड वी आर जस्ट मेकिंग अवर स्टूडेंट टू द एंटरप्रेन्योर. So we are working on that particular thing, but as you told us कि there are many, and we know that there are very underprivileged students or persons who wants to do the business. Yes. So that नहीं, और वो स्टूडेंट नहीं भी है तब भी चलता है, मतलब वो लोग नहीं है, वो अपना कहीं कारोबार कर रहे हैं, हमारे अलीगढ़ में ताले के कारखानों में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग मेरे क्या सीखने आए, और पत्ती का काम कर रही हैं औरतें, बस दूरी पे कर रही हैं, अब उनका अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया। अभी रिसेंटली एक लेडी आई, वो अपने घर से ब्यूटी पार्लर चला रही थी पिछले वर्कशॉप में, तो बोलती है कि मैम कुछ ऐसे ऐसे, उसको 10-12 लाख लोन चाहिए अपनी दुकान खरीदने के लिए, क्योंकि घर से कर रही थी छोटी सी जगह पे, तो नाउ उसका पेपर वर्क वगैरह स्टार्ट हो गया। तो एटलीस्ट यू नो वी आर 3 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे प्रोग्राम के, एजुकेट, हैंड होल्डिंग एंड नेटवर्किंग, तीनों चीजें हम एक साथ प्रोवाइड करते हैं। तो एजुकेशन भी होता है सेशंस में, क्लासेस में, तो मे बी इफ यू आर इंटरेस्टेड तो वी कैन मीट एंड वी कैन सिट एंड डिस्कस द डिटेल्स अबाउट हाउ टू डू इट। Surely, thank you. And it's really good, you know, I feel so proud seeing you all over there getting well established gradually. Congratulations, बहुत अच्छा लगा मुझे। Thank you, thank you. Any more discussion? Anybody's interested? हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। राम जी बोल रहे हैं? जी राम दर्शन मैडम मैं बोल रहा हूँ। जी 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 जी, बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अधिकतर जनसंख्या तो ग्रामीण है, तो ग्रामीण वालों के लिए ज्यादातर तो मुर्गी पालन, फिशरी और डेयरी, इसमें मैंने देखा है कि अधिकतर घाटा ही आता है, चाहे मुर्गी वाले में हो, कभी आता है कि कोई बीमारी चल गई, उसकी वजह से सारी मुर्गियों को मारना है, उसके बाद ऐसा धंधा बैठता है कि दोबारा कभी उभरने नहीं पाता है आदमी। तो दूसरी नीतियां भी इस तरह से हैं, सामाजिक भी समस्याएं हैं, इन सारी चीजों से कैसे निपटा जाए? और घाटा ही आता है, डेयरी में भी देखिए घाटा आएगा, फिशरी में भी देखिए घाटा, छोटे मोटे उद्योग में लगाने में बड़ा स्तर पर तो ये मुश्किल ही है सबके लिए। देखिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक सबसे मजबूत जो फीचर जरूरी है वो है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, है ना। और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के लिए आपको बहुत इतने समय में सब कुछ तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि आप अपने पैसे को इस तरह से लगाइए कि एक ही चीज में सब कुछ में ना लगा के आप उसको डाइवर्सिफाई करिए, ठीक है ना।
और कैसे उस चीज को जो सबसे पहले ज्यादा आपके लिए हर्डल्स या प्रॉब्लम दिख रही है जिसकी वजह से घाटा हो जाता है, तो पहले उस पे होमवर्क कर लेना चाहिए अच्छे से कि इससे कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा नहीं, बहुत से लोग मुनाफे में भी कर रहे हैं यही सारे काम। और अगर आपने जो कास्ट या उसके हिसाब से बोला है तो लेट अस नॉट डिस्कस ऑन दैट, बिकॉज दैट इज अनदर डोमेन ऑल टुगेदर। वो फिर आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, वो कुछ और सब्जेक्ट होगा डिस्कशन के लिए। जी मैम, ठीक। Let us not go into that. But yes, obviously, if you are an entrepreneur, you should have a risk bearing capacity. वो तो डेवलप करना ही पड़ेगा। और फिर एंटरप्रेन्योर अच्छा वही होता है जो रिस्क लेता है, नुकसान भी उठाता है, फिर भी झाड़ के खड़ा हो जाता है कि हाँ भाई दोबारा से मेहनत करनी है, फिर से नहीं हो सकता दुगना मुनाफा हो कि पिछले वाला लॉस भी। लेकिन ये डर से कि लॉस हो जाएगा तो हम शुरू ही ना करें तो कोई फायदा नहीं, वो ऐसे नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर 10 बार फेल होता है तब भी वो डटा रहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो हम कामयाब होंगे। ठीक है, धन्यवाद। एंड आप अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह से मोटिवेट, अगर आप उल्टे से बोलेंगे ना, पीछे से शुरू करेंगे कि नुकसान भी होता है और ऐसे भी, तो वो बंदा शुरू करने से पहले ही वो बैठ जाएगा कि अरे भाई इतने नुकसान पहले बता दिए, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें जैसे उसे डेयरी का था मैडम, डेयरी में जो भी खरीदे गए गाय या भैंसे खरीदी गई, हाँ 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 उनके उनके जब मैं बीमा कराने के लिए, तो जानती हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य कई उत्तर भारत में कोई भी डॉक्टर आता है तो आप कंप्लेन करिए चाहे जो करिए, कुछ ना कुछ लेता है वो, कहता है इतना दो तब आपका हम बीमा करेंगे। हकीकत है ये मैडम, कहीं भी आप शिकायत करिए वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती है। इसी संदर्भ में कहा कि उसको भी दीजिए, उसके बाद अगर वो मर गई भैंस तो 80,000 रुपए वो भी चला गया, और उसके बावजूद जो लगाया था चला गया। ये सब चीजें जो है बेसिक प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो है, लेकिन उसके बाद भी जूझता है। और देखिए जब ये चीजें जब प्रमोट होती हैं, हर चीज की एक स्टेज होती है ना, वो जो सिस्टम है, देखिए वही वाली चीज है, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होना कितने अच्छे से वो एग्जीक्यूट होती है, ये हम इंसानों पर एक एनवायरनमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। चीजें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होती, अच्छी से अच्छी पॉलिसी फेल हो जाएंगी। जी वैसे सोचिए ना, तो वो बिल्कुल फिर अलग डोमेन हो गया कि हमारे क्या क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है, करप्शन लेवल कितना है, बहुत सी चीजें फिर आ जाती हैं डिस्कशन में। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन इन सबके होते हुए ये नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम डिस्करेज नहीं कर सकते हैं। आप देखिए दुनिया को बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ही चला रहे हैं, जितने बिजनेसमैन है बड़े बड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? इट वॉज अ बिजनेस। ईस्ट इंडिया जी कंपनी वॉज अ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, है ना, पूरा जी हिंदुस्तान चलाया उसने। तो है ना? ठीक मैडम। हाँ, तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक मुझे लगता है कि काफी अंतर है। जी व्यवहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से अंतर है काफी। हाँ हाँ, वो मुझे लगता है किसी और वर्क प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कशन करेंगे जब इस एरिया पे करेंगे। आप वहाँ किस कॉलेज में हैं वैसे, बिलोंग करते हैं? मैं मैडम इस समय फतेहपुर में हूँ। अच्छा 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 हाँ, राजकीय महिला महाविद्यालय फतेहपुर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत जी अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई। जी और मैडम, धन्यवाद। क्योंकि बच्चों को बताना है, रोज कोई ना कोई फंक्शन कराना ही रहता है कि आप जाके किसी इंडस्ट्री और किसी उद्योगपति संपर्क करिए। जिस उद्योग, कौन सा उद्योगपति आसपास में तो मिलता नहीं है कोई। छोटे मोटे जे ले आइए या सेवा नियोजन से ले आइए, किन्हें कुछ बताइए, वो बताने का फायदा तो बहुत कम मिलता है। हकीकत यही है, बच्चे सुनते हैं चले लेकिन जाते हैं। उनको देखिए कुछ पता नहीं है, आप 100 को मोटिवेट करेंगे, अगर 2 ही बड़े उद्यमी बन जाए आपके शहर में, तो हाँ ये आज बात तो। बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी वो। और वो जो जी है 2 बड़े कारोबारी अगर बड़े एस्टेब्लिश, तो काफी चेंजेस वही लोग इकोनॉमी में ला देते हैं, सोसाइटी में ला देते हैं। तो कोशिश करते रहिए, कुछ पता नहीं है कहाँ पे कामयाबी मिल जाए, जी जी मैडम, है ना? ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। Ma'am, assalamu alaikum. May I tell you something? जी जी, यस यस Uh, सर।
मैम मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर बहुत सारे इंटरप्रेन्योर है, लेकिन उन लोग बोलते रहते हैं कि मैम ठीक है हम लोग मशरूम कल्टीवेशन करते हैं कि, लेकिन मार्केटिंग का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर मशरूम का ऊपर। तो उन लोग बहुत नुकसान ये करते हैं, लेकिन लोन लेता है, लेकिन मार्केटिंग का बहुत प्रॉब्लम है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है मैम? हाँ, तो इस पे जो है मे बी यू कैन गो फॉर सम, अगर आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हैं? नहीं मैम, मैं गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज सिंगूर से हूँ, वेस्ट बंगाल का। अच्छा, सिंगूर में है आप। यू आर अ लेक्चरर देयर? Yes, assistant professor here. Assistant professor. Okay, that's very good. हाँ, तो here I think if this is a major issue, अगर मैक्रो लेवल पे ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होगी, गवर्नमेंट बॉडीज की होगी, एंड यू हैव टू लुक एट द पीपल हु आर एंगेज्ड इन मार्केटिंग. सो मे बी उसका जो है कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन जो और जगहों पे कैसे चल रहा है, क्योंकि मशरूम तो और जगह भी बहुत अच्छा और वैसा वो है, तो आप उसको देखिए. उनको वहां पे आपको थोड़ा सा जैसे रिसर्च करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आर द ways and methods and how you can promote. अब ये मार्केटिंग का काम भी देखने के लिए नए बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पे मुझे, तो कि maybe people can be motivated to go into the business of marketing those, selling those mushrooms into the field. जो बना रहे हैं ठीक है, उनको प्रोड्यूस करने दीजिए, but then how to maybe pack them, because it's a very delicate, very fragile vegetable, perishable होता है ना, इसलिए तो उसको बहुत ही आई थिंक कुछ डीप फ्रीजर्स या जो भी टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है नए कारोबार करने की लोगों को. तो यू कैन ऑलवेज मे बी गो फॉर, आप कोई वर्कशॉप प्लान करिए या कोई प्रोग्राम इस तरह से सेमिनार करिए जिसमें आप इन इस पे जो है लोगों को डिस्कशन कराइए एंड लेट न्यू आइडियाज कम इन. Exactly. And you can also invite not only academician, you can invite the industry people also. You can invite the young startups also कि हाँ भाई आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि अब आप इसको डेवलप करो और ये यहाँ से वहां तक के माल को मार्केट तक पहुंचाओ और बिकवाओ. तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज नहीं हो रही है, वो तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. तो यू कैन मोटिवेट योर स्टूडेंट्स कि ये डोमेन ऐसा है जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो यू विल बी अर्निंग. और शुरू में जो एस्टेब्लिश करेगा वो ज्यादा पैसा कमा लेगा, फिर उसके बाद उसको देखा था कि तो और लोग एंटर करते हैं मार्केट में, देन दे शेयर द पार्ट. तो आई थिंक यू कैन डू दैट, एंड टू बिगिन विद यू कैन गो विद कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड मे बी वर्कशॉप्स कि कैसे इनको मार्केट तक पहुंचाया जाए, इन प्रोडक्ट को कैसे करा जाए, ये आप करा सकते हो. ओके मैम, थैंक यू मैम. Good evening, ma'am. Good evening. This is Ranjan from Assam. Okay, Mr. Ranjan. Ma'am, Yes. ma'am, today after listening your lecture, I have gained some interest in entrepreneurship. That's great. I find myself successful even if one person is motivated towards that. Really motivated. Ma'am, do you offer any short-term course on entrepreneurship so that I can tell something to my students in the college? There are so many online courses on entrepreneurship, which because these days online courses are much more, convenient. So वो भी है. और एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज अभी आप स्वयं पोर्टल पे भी लॉन्च होने जा रहे हैं. अभी मैं भी एक लॉन्च करने वाली हूँ नियर फ्यूचर, मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर. सो वेयर आई विल बी टीचिंग ऑल द बेसिक्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कि अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स कैसे वो अपना प्रोक्योर करें और कैसे उसको काम करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट अभी maybe and if you want to go to international level, वहां पे आप करना चाहते हैं तो वहां के प्लेटफॉर्म पे भी आप जाके देख लीजिए, खूब है और बहुत अच्छे सब जगह अवेलेबल है. You can go for it. Students should be promoted, I think you all should start doing your homework to push the students towards entrepreneurship, because job की कोई गारंटी नहीं है. तो इसमें से जितने लोग जितनी जल्दी अपने को सेट करना शुरू करें कारोबार करके, तो बहुत अच्छी बात है. Yes, ma'am.
हाँ The thing is, मैंने college में अभी तो UGC is stressing on entrepreneurship, but we are not authorized to speak on this because we are not trained. हाँ to yes. speak. Yeah. So you have to do some courses, online courses, and then you get certification, and then maybe and then you read a lot and you learn a lot. Learning is by knowing things and exploring things and researching things. और उसके लिए अगर जरूरत है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज करिए, अवेलेबल है काफी। और मैं खुद अभी नेक्स्ट समर्स में मेरे ख्याल से अगले 6 महीने बाद आ जाएगा कोर्स मेरा भी स्वयं पे on entrepreneurship. Then you can go, maybe I'll be giving you all the details of that. Thank you, ma'am. Okay. And all the best. You are thinking in the right direction. Thank you. Because the world will be, India में तो entrepreneurship का पूरा माहौल आने वाला है बहुत अच्छे से। Very Yes. हाँ 3-4 साल, क्योंकि देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लॉन्च करी गई है। 4 साल का FY यूपी में 4 साल का है। 4 साल पूरा करने के बाद इसके रिजल्ट दिखेंगे ना। जो जनरेशन अब इसको क्वालिफाई करेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने कोर्सेज को 3-4 साल के बाद, वी कैन विटनेस द रिजल्ट्स ओनली आफ्टर दैट। तो अभी 3-4 साल के बाद से हमें एकदम से दिखना शुरू होगा लोगों का, बच्चों का डाइवर्जन इसकी तरफ, इंस्टेड ऑफ सीकिंग फॉर जॉब ऑल द टाइम। और स्टार्टअप अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो भी गया इंडिया में वैसे भी। वी हैव सो मेनी यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स, वी हैव सो मेनी स्टार्टअप्स दैट हैव ऑलरेडी इमर्ज्ड एंड दे आर वर्किंग सो वेल। क्योंकि हमारी जो ओवर पॉपुलेशन है वो भी तो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रही है ना अब। We are good, is very strong consumer base also. Yes, please. Anybody else? So it was very nice talking to all of you. Yes, ma'am. Is a question from my side. Good evening, ma'am. Yes, yes, yes. मैम कई बार अगर हम बात करें पहाड़ों के रीजन्स की, बिकॉज आई बिलोंग टू पिथौरागढ़, एंड हम देखते हैं कि ठीक है हम एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों के अंदर डेवलप तो करें, बट दे आर लैकिंग इन आइडियाज। ओके। तो उनको सराउंडिंग्स में किस तरीके से डेवलप करें, और कई बार हो सकता है हम कॉमन आइडियाज भी हो, तो हाउ टू लाइक डू इट इन राइट वे? देखिए this has to be, that's what I was saying, that if we inspire students at a school level or maybe at college level also, तो एक जो उनका क्रिएटिविटी बॉक्स होता है ना ब्रेन में हमारा, जी मैम, वो जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक के वो विजन या वो डेवलप नहीं होगा। यस मैम। So this we have to work, being teachers, we have to work on those boxes. That if it is, it is necessary, because unless you are not, आप देखिए कारोबार जो लोग करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स लाते हैं, कंज्यूमर किंग है मार्केट का। तो पहला शुरुआत कहाँ से होती है कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, लोगों को जरूरत क्या है। अगर सर्फ एक्सेल बिक रहा है तो सर्फ एक्सेल से बेहतर क्या चीज ढूंढ रहा है कस्टमर। कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज और बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी, जो एक एंटरप्रेन्योरल माइंड को क्लिक कर जाता है। ठीक है, तो मे बी वी कैन बीइंग टीचर्स व्हाट वी कैन ऑलवेज एनकरेज, और मे बी वी कैन टेल द स्टूडेंट्स, इस पे डिस्कशन करा जाए कि आप अपने चारों तरफ जो चीजें देखिए तो उसको गौर से देखिए, उसमें देखिए कमी क्या है, इसको पूरी कैसे करी जा सकती है। देयर डेवलप्स इन एंटरप्रेन्योरल इनसाइट्स। तो वो भले ही करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन आइडियाज उसको रोज में कम से कम 50 बार आएगा। यस मैम। बिकॉज देन उसका एक नजरिया चेंज हो जाएगा चीजों को देखने का। ये जा रहे हैं तो सड़क टूटी है तो ये इतनी जल्दी टूट जाती है, क्यों टूट जाती है, इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, लॉन्ग रन सोल्यूशन कैसे हो सकता है, या ये प्रॉब्लम अगर है तो यू जस्ट हैव टू चेंज देयर फोकस एंड डाइवर्ट देम की प्रॉब्लम को देखो, पहले देखना शुरू करो। क्योंकि काफी लोग, हम लोग ऐसे भी होता है कि वी हैव द प्रॉब्लम्स अराउंड, हमें दिखता नहीं है। यस मैम। Isn't it? So first we have to develop that. So let's start by doing these small activities, Yes, ma'am.
encouraging them कि नहीं देखो and let us discuss, और फिर देखते हैं उसके solution में भी 10 solution बताते हैं. कभी कभी बच्चे बहुत अलग सा solution बता देते हैं, कुछ पता नहीं रहता है. For example, I was reading a story somewhere कि स्पेस पे पहली बार जब जाया जा रहा था तो वहां पे ये होता था कि हर चीज ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो पेन काम नहीं करेगा वहां पे, क्योंकि इंक जो है वो ऊपर ही की तरफ रहेगी. तो बॉल पॉइंट हो या कोई सा भी हो, पेन नहीं, क्या करें क्या करें. देयर वाज अ चाइल्ड, ही सेड you can use my pencil, there is no problem in that. He came out with a different solution and a very sustainable solution, and वहाँ पेंसिल जाने लगी फिर. तो मतलब ये है ना कि आप बच्चों को जब एंगेज करिए, आप उनको इन्वॉल्व करिए और टेल देम, मतलब यू जस्ट मोटिवेट देम टू थिंक और एक्सप्लोर करिए, ध्यान देना शुरू करिए चारों तरफ. तो Yes, देन ma'am. यू कैन हेल्प देम टू जनरेट दैट क्रिएटिविटी इन देम, एंड यू नेवर नो कब किसकी क्या क्लिक कर जाए. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Okay, so we can call it a close now. Can we? Okay, thank you, ma'am. Thank you. Okay. So thank you so much. Thank you. It was lovely. Very nice. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hope to see you again. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.